Hello. Cool. Hello and welcome to yet another YouTube live session. चलो आज पहली एक्सपायरी थी आफ्टर द इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर. फर्स्ट बैंक निफ्टी एक्सपायरी एंड बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स वीकली एक्सपायरी. और थोड़ा सा अंदाज था वैसे ही हुआ तो 38,000 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी ऐसा लग रहा था. 37,500 के नीचे नहीं होगा ऐसा लग रहा था. तो कुछ ट्रायंगल्स किए थे मैंने. 38,000 के कॉल्स बेचे थे, 37,500 के पुट्स बेचे थे ओवरनाइट. तो उसमें अच्छा खासा पैसा आया. एंड देन इंट्राडे में मैंने कुछ ऑप्शंस के सेलिंग की. एक दो स्ट्राइक में थोड़ा लॉस हुआ और बाकी सारे प्रॉफिट्स में थे. सो ओवरऑल नेट अच्छा था. दिन डे वाज गुड. एंड लेट मी टेल यू माय स्ट्रेटेजी फॉर दिस सीरीज. ओके, जैसे मैंने लास्ट थर्सडे को कहा था, 31 मार्च को शायद अपना सेशन था. और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक निफ्टी जो है ना वो ट्रेंड लाइन तक जाएगा. देयर वाज अ ट्रेंड लाइन व्हिच आई ड्रॉन. तो यहाँ तक जा सकता है ऐसे मैंने लास्ट थर्सडे को भी कहा था. एंड या लेट मी शो यू व्हाट आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन. क्या मैं सोच रहा था जरा दिखाने दो मुझे. यस. सो निफ्टी. So this was last Thursday, and this was last Thursday, I guess. So I was contemplating on this. ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी पहले से. एंड दिस इज हाउ यू कैन एनविसाज थिंग्स. जैसे ये ऊपर जाके नीचे गया था तो ये एक एक्सपेक्टेड था. दिस वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज देयर वाज अ ट्रेंड लाइन. एंड माइंड यू, when there is a lower high compared to this and then the lower low, so एक lower high ही बनता है. immediately breakout करना मुश्किल रहेगा, ये मुझे भी लग रहा था. तो at this point it was a great opportunity to either sell calls and book profits, okay, on the long positions, and which is exactly what happened. all right. So अगर हम देखें तो exactly वैसे ही हुआ. 2 दिन, ये फ्राइडे था, बाद में थर्सडे को गैप अप हुआ था. ये गैप अप की वजह क्या थी? वजह ये थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी एचडीएफसी की. एंड वो न्यूज क्या थी? एचडीएफसी बैंक का मर्जर. एंड देन एचडीएफसी बैंक वेंट अप, एचडीएफसी वेंट अप, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी पूरा पैक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी सारे ऊपर गए थे. बट they could not sustain. Okay, so when such things happen, direct move all the way to this, it's better you book some profits. And 18,100 और 18,200 के मैंने कॉल्स बेचे थे तभी. I exited yesterday because उसमें कुछ ज्यादा बचा ही नहीं था. And I didn't focus, shifted my focus to Bank Nifty. So what did Bank Nifty do? Obviously HDFC Bank was a big downer for Bank Nifty. Thanks to Axis Bank and ICICI Bank, HDFC Bank did not bleed. But अगर आप देखोगे तो ये पूरे न्यूज का जो तमाशा था उस दिन, उसके बाद से लास्ट 3 दिन से HDFC Bank नीचे आ रहा है. एंड ऑब्वियसली अगर देखें तो ये जो रेजिस्टेंस था HDFC बैंक का, इसके ऊपर जा नहीं पाया HDFC बैंक. सो दिस वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड. इट वाज वेरी टफ टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस. एक बहुत ही बढ़िया मौका था सबको प्रॉफिट बुक करने का व्हेन देयर वाज अ ग्रेट न्यूज. ओके, सो यही सीखना है बाकी लोगों को कि जब न्यूज ऐसी आती है तो कैसे क्या करना चाहिए ना, वो सीखना बहुत जरूरी होता है. जस्ट न्यूज आ गई इसलिए जाके बाय करोगे तो फंस जाओगे. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, ओके, फॉर पीपल हु फॉलो न्यूज and don't follow proper study and technical charts. All right. So this was a time to buy. Probably this was a time to buy here with this small morning star sort of a thing. Okay, but this was not the time to buy. I had a live market session on this day. मेरा live market session था Monday को at Ahmedabad, and even there I was telling that no, this is not the time to buy. Please don't buy. If you have bought it, you better book profits. Okay, and this the same was the case with HDFC and HDFC AMC and so on. So look at this. I think the reality is striking. Just because of merging 2 companies, I don't know whether this is really a great news. So market is not showing, market is not welcoming it. अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो एक बहुत ही बड़ा इन्वर्टेड हैमर जैसा है. एक पिन बार है, बहुत बड़ा ऊपर जाके नीचे आया है. नॉट अ गुड न्यूज फॉर HDFC पैक. ओके, क्या अभी ऐसे गिरता रहेगा? मे बी नॉट, बट at least for the time being the top is in place. Okay, same is the story with HDFC AMC. HDFC AMC ने भी वही किया, and obviously it was underperformer, so same thing happened with it.
के ऊपर जाके बाद में नीचे, और आज सारे स्टॉक्स नीचे है, एचडीएफसी लाइफ के भी वही हाल है. Okay, but they are little better off than HDFC and HDFC Bank. Okay, so what did work today? Axis Bank. I think Axis Bank was doing decently good today. But again, अगर हम देखें तो this is right at the trend line. Okay, after almost equal high, equal low here. So it remains to be seen what it does. Okay, whether it really breaks out. So कल के बाद देखना होगा. You know, even if it breaks out, it has to cross this major hurdle. ये भी एक hurdle है. यहाँ पर तो इसको क्रॉस करना होगा. So unless this happens, there is no point in betting on longs. Okay, it's a major resistance from the past also. Okay, so let's say an ICICI Bank, this is underperforming quite a bit. Okay, for quite some time. All right, so ये भी अगर ऊपर जाता है तो it's going to face stiff resistance somewhere here. Okay, yeah, one of the picks we had was SBI. Okay, SBI last week से मेरा थोड़ा सा bullish view था, और after Friday's action, you know, 1st April, I was little bullish. But what I did some spreads in this, and मैंने puts बेचे थे, 500 के puts बेचे हुए हैं, और 520 के calls भी बेचे हैं. मैंने 520 की calls भी बेचे. So I'm doing some strangles. So I'm not expecting, you know, a runaway rally in these stocks. Okay, I'm not expecting a big rally immediately. So I'm doing, you know, I'm taking advantage of these moves and selling options. ऊपर जाता है तो मैं calls बेच रहा हूँ, नीचे आता है तो मैं puts भी बेचता हूँ, लेकिन puts में बेच चुका हूँ. तो आज मैंने क्या किया, मैं दिखा देता हूँ आपको आज मैंने क्या किया. You know, indices में अगर हम देखें, so 37,500 का put, ये मेरे पहले से शॉर्ट था कि मैंने कवर किया 8 रुपए के एवरेज से. So that's okay. But 37,000 ये जो कॉल्स है ना, 38,000 कॉल, ये मैंने बेचे थे 70 के एवरेज से, जो कवर के 3.58, और ये जो 2000 क्वांटिटी एक्स्ट्रा दिख रही है वो मेरे कल से पोजीशंस थे, वो कवर किया मैंने. सो देयर इज सम डिसेंट प्रॉफिट्स हियर. 37,900 कॉल, इसमें भी प्रॉफिट है. 37,800 कॉल, इसमें भी प्रॉफिट है. ओके, बट आई मेड अ डिसेंट लॉस इन 37,500 कॉल. ओके, I made some loss here, 1.65 lakhs. Okay, but this was again a positional trade. So overall positional में profit ही था. What I've done today, you know, उतना कुछ खास मजा नहीं आया. But what have I done? I'm shorting Adani calls. Okay, so this is what you know. There is some news and there is, I think, a rights issue in the making. So Adani Enterprises, a long-awaited bounce and long. You know, we have been talking about this stock that, you know, one day it is going to do a breakout. You know, एक दिन एक शायद ब्रेकआउट करेगा, न्यू हाई करेगा. ये दिख रहा था 21,050 का एक टारगेट था हमारा, 2150 to 2200, वो आ चुका है. और आज क्या दिखता है, you know, आज ऐसे दिख रहा है कि there is a decent red candle today. Okay, after a spinning top. You know, yesterday there was a neutral candle, and today there is a close, and you know, it's more or less, you know, it's something like the evening star. Okay, all right, so मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी 2200 2300 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा. Okay, we call it a YNJ setup. You know, यहाँ नहीं जाएगा YNJ, and if it is YNJ, you know, I've been selling these options since yesterday. कल भी मैंने इसमें कॉल बेचे थे, और आज भी मैंने कॉल्स बेचे हैं. You know, 68 का एवरेज है. मैंने शुरुआत तो 95 से की थी, but then I shorted even more. I shorted right in the morning at 95, and then I shorted even more later on. So 95 में बेचा था, but then I lower levels also I shorted. Okay, so this call 2200 का कॉल, ये मैं शॉर्ट कर. Okay, whereas the price is 2100 now. So काफी ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट है इसका, और मुझे ऐसा लगता है कि, you know, there could be a temporary top in Adani groups. The same thing with Adani Ports. We were little bullish on Adani Ports. I was bullish right after this, but now it's time to book profits. ऐसे मुझे लगता है. Okay, और अगर हम देखें बारीकी से, so what has happened is, you know, this particular resistance was broken day before yesterday, but now the price has again come down. Okay, so this is not sustaining. जो परसों का जो माउंस था उसके भी प्राइस नीचे आई है. So I think ये जो न्यूज ड्रिवन जो भी मूवमेंट है इस स्टॉक में, अदानी ग्रुप में, वो मुझे लगता है कि जैसे HDFC बैंक के हाल हो रहे न्यूज के बाद सब नीचे आए हैं. नाउ ये
राइट्स इशू के चलते कुछ उछाल है स्टॉक्स में, आई बिलीव इट्स टाइम टू नीचे आओ, ठीक है. सो दिस इज फिंगर्स क्रॉस, दिस इज व्हाट आई बिलीव. आई कैन बी रॉन्ग, डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली, ओके, प्लीज डोंट फॉलो me, and then these are my ideas. These sessions are just to share how I think, what I do, not to give you any tips. We don't believe in tips. All right, so uh, let's start with some questions and the comments that we have. हमने एक recently poll run किया था, so let me show you that. Yeah, which type of trader you are. So we just wanted to have some poll and see what kind of people are watching our channel. And so sniper, कुछ लोगों ने, very few people are sniper, and going to come to what is sniper. Intraday trader, positional trader. So कुछ intraday traders की काफी संख्या है, positional traders भी है यहाँ पर, यानी कुछ लोग कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए ट्रेड्स को कैरी करते हैं, वो है पोजिशनल ट्रेडर्स. और इन्वेस्टर्स है 7% and not started trading at 7%. Okay, so that's also fine. And then we have some comments. Mangesh Munde, every time I think of taking a trade and book profit in 2-3 days or in a week, but eventually it converts into a monthly or sometimes 6 months, sometimes never ending game. Okay, so I don't know which type of trader I am. And he's putting a nice smiley. Nice personality, yeah, Mangesh. I think you are neither sniper nor positional trader. You are a Abhimanyu of the market. जिसको एंट्री करने को मालूम है, एग्जिट का मालूम ही नहीं है. सो यू आर सेइंग दैट 2-3 दिन के लिए एंट्री मारते हो, बाद में तो पोजीशन लेके बैठ जाते हो, एंड समटाइम्स 6 months और इवन नेवर एंडिंग स्टोरी. सो भैया, तुमको ना अपने एग्जिट क्राइटेरिया को डिफाइन करना पड़ेगा, एंड दैट कैन बी एज सिंपल एज बुकिंग प्रॉफिट्स, और some technical base or some fundamental base. Okay, जब मेजर रेजिस्टेंसेस पे स्टॉक्स आते हैं, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ मार्केट्स लाइक HDFC बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, जब मेजर रेजिस्टेंसेस पे स्टॉक्स है, यू आर बेटर ऑफ सेलिंग एंड बुकिंग प्रॉफिट्स. ओके, तो ये मेजर रेजिस्टेंसेस कैसे ढूंढने हैं, चार्ट देख के पता चलता है. जो टॉप्स होते हैं उनको ज्वाइन करो, तुमको ट्रेंड लाइन मिलेगी. जैसे निफ्टी में हमने देखा, ओके, जैसे निफ्टी में हमने देखा, लेट मी शो यू. Yeah, so when there is a major resistance, so लोग यहाँ पर बुलिश नहीं होते, यहाँ पर बुलिश हो जाते हैं. So this is what people fall into traps of the markets. So this green candle is not the candle to buy. Not every green candle is buying signal, whereas this green candle was a buying signal. It was a bullish signal. So I think this is something everybody needs to understand. कि और obviously थोड़ा बहुत एलियट अगर तुमको आता है तो और भी मजा आएगा. Okay. थोड़ा बहुत एलियट आएगा तो और समझेगा, but this was not the time to buy because it was approaching major resistance. And this is exactly what I had posted in few of my groups, that be aware about this trend line and take advantage of this to maybe sell calls, buy puts, or book your profits. Okay, so last 3 days has been falling now, and with the gaps. Okay, so Nifty has been underperforming. All right, and what is taking Nifty down? Okay, थोड़ा बहुत करेक्शन रिलायंस में भी आया आफ्टर रिलेंटलेस मूव. सो ओके, तो ये अगर देखें हम, तो रिलायंस में भी आफ्टर सम न्यूट्रल पैटर्न्स देयर इज अ फॉल. सो रिट्रेसमेंट तो बनता है. अभी इतने मूव के बाद मुझे लगता है कि एक हायर लो करने आएगा, और आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ रिलायंस कम्स ऑल द वे टू दीस लेवल्स 2461. ओके, अनदर 100 पॉइंट्स, 100 odd points. ओके, रिलायंस नीचे आ सकता है और निफ्टी को भी नीचे लेके आ सकता है. What about IT stocks? TCS of the world. So TCS, I was not expecting a move. In fact, इस दिन को भी मैं I was not bullish. So ये आपको समझना है. Just because this green rate क्या ये है, लेकिन यहाँ पे major resistances है. So ये major resistances होते हैं, major resistances थे. So it is just taking that resistance, and now it has just eaten up this candle. There is a bullish bearish angle. कल ही मेरा एक सेशन हुआ था, कॉन्सेप्ट 1 हुआ था मेरा 3G09 स्टूडेंट्स के साथ, and it was fun. I'm sure lot of students are watching this. कल हम 1:30 बजे तक enjoy कर रहे थे सेशन. 9 बजे शुरू हुआ था सेशन, and I thoroughly enjoyed. Lot of question answers were dealt. And जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा है, I'm sure शायद हमारे जो AC के मेंबर्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप जाके वो सेशन वापस देखो. It's basics, but I'm a believer of basics. So simplicity works always in the market. So always it's good to get back to basics. Okay. So do join.
डू वॉच दैट वीडियो, आवर स्टूडेंट्स कैन वॉच, ऑब्वियसली नॉट द पब्लिक, बट हमारे स्टूडेंट्स को शायद वो वीडियो अवेलेबल किया जाएगा। कल का जो मेरा सेशन था 3G09 स्टूडेंट्स के साथ, जरूर देखना। एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी सॉ लाइव ऑल्सो, लाइक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस भी हमने लाइव देखा था, और मैंने कुछ मेरे ट्रेड्स भी दिखाए थे। मैंने जो नेचुरल गैस जो सेल किया था वो पहले बाय किया था, बाद में सेल किया, बाद में वापस नीचे आया तो मैंने बाय किया था। सो वो जरूर देख सकते हो। ओके, या ऑलराइट, अब आज क्या हो रहा है। हटा सावन की घटा, अगर आप कल कंसेप्ट 1 में थे, ओके, तो जरूर अपना नाम और अपना लोकेशन लिखिए। एंड इफ you have been enjoying this 3G09, 3G08 and all our journey, I have been मेरा लास्ट एक पड़ाव था अहमदाबाद, एंड अहमदाबाद में गया था, मेरा लाइव मार्केट हुआ मंडे को, एंड आई एम बैक टू मुंबई। सो इट्स बीन सॉर्ट ऑफ अ भारत भ्रमण, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव सिमिलर सेशंस इन नवी मुंबई इन कमिंग डेज एंड वीक्स। ओके, सो अगर आप ने एंजॉय किया है तो प्लीज पोस्ट योर नेम, location, and how was your experience overall? How was it? I really enjoyed meeting you all in person. Okay, so hamare students, please post messages in the chat box. I would definitely love to see them. All right, so coming back to this poll, don't be Abhimanyu. You have to have a exit criteria. As I said, major resistances pe aap book kar lo profit. Don't be greedy. Okay, and आपका main सबसे इंपॉर्टेंट हमारा धर्म जो है ना, हमारा धर्म है प्रॉफिट बुक करना। तो प्रॉफिट बुकिंग इज ऑफरिंग सर्विस टू मार्केट गॉड। ओके, जो प्रसाद चढ़ाना कहते हैं। तो प्रसाद चढ़ाओ, प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ, एंड देन अगेन वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ओके, तुम्हारा काम है यहाँ बाय करना, और जब वो ऊपर जाता है तो प्रॉफिट देता है तो बुक करना। और ये ऊपर कौन लेके जाता है? कोई और लेके जाता है, राइट? तो कोई और लेके जा रहा है तो आप पे बहुत मेहरबानी कर रहा है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, आपको थोड़ा ट्रेडर्स के जैसे सोचना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ठीक है, बात अलग है, लेकिन आजकल इन्वेस्टमेंट ऐसे भी कुछ रहा नहीं है। दिस मार्केट्स आर नॉट फॉर काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। हार्डली एक साल में अगर आप रखते हो तो 10% टैक्स है, एक साल के अंदर बेचते हो तो 15% टैक्स है। So there is nothing like long-term investments nowadays, and a lot of people are resorting to short-term exits. So 6 महीना 8 महीने में लोग निकल जाते हैं। अगर HDFC बैंक अपने लोज में बाय किया होता तो डेफिनेटली दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी ऑफ यू टू बुक योर प्रॉफिट्स। ऑलवेज माइंड योर एग्जिट्स गाइस, माइंड योर एग्जिट्स। ओके, या अगर TCS किसी ने यहाँ पे बाय किया तो ऑब्वियसली वो बुक करने वाले हैं प्रॉफिट्स। ओके, ऑलराइट। पोजिशनल ट्रेडिंग से ROI 20% आता है 307 SMM स्टूडेंट। देखो, हमेशा आता है, ऐसे मैं नहीं कहूंगा वेल्थ गेनर, ऑफ कोर्स इज आवर स्टूडेंट, बट यस, आता है जरूर। इफ यू रियली अप्लाई योर स्टडी प्रॉपर्ली, आता है। ऑलराइट, व्हाट मेंट बाय स्नाइपर ट्रेडर? व्हाट मेंट, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज स्नाइपर। स्नाइपर कौन होता है? जो घंटों अपनी शिकार के लिए वेट करता है, ओके, और उसके लिए एक एक गोली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ ना, जैसे मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूँ, एक एक रुपी तुम्हारा सोल्जर है। तो एक एक रुपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए तुम बिफोर पुटिंग योर मनी एट स्टेक, पैसे को दाव पे लगाने से पहले सोचो, 10 बार सोचो। ओके, एंड बिफोर पुलिंग द ट्रिगर, तो सारे हम हमारे कोर्सेज में सारे एक चेकलिस्ट वगैरह देते हैं। सो बिफोर यू पुल द ट्रिगर, यू ऑलवेज सी वेदर इट इज फिटिंग इनटू अ पर्टिकुलर सेटअप एंड फिटिंग इनटू योर रिस्क मैनेजमेंट। अनलेस जस्ट बिकॉज अरे ऊपर आया है ग्रीन कैंडल इसलिए बाय करना नहीं होता है, तो उसको रिस्क मैनेजमेंट में भी बैठना चाहिए, राइट? तो अनलेस इट हैपेंस, डोंट पुल द ट्रिगर। ओके, सो यू पुल द ट्रिगर। स्नाइपर ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो बहुत कम ट्रेड्स लेते हैं। okay? शायद महीने में एक आध ट्रेड लेगा, या कभी कभी 2-3 महीने में एक ट्रेड लेगा, लेकिन ऐसा ट्रेड लेगा जो एक बड़ी शिकार करेगा। ओके, तो बड़ी शिकार करने वाले एक ही इसमें, जैसे क्रोकोडाइल्स होती है ना जंगल में, वैसे ओके, जो आराम से सुस्त पड़ी रहती है। So it's good to be lazy in the markets. Okay, you don't have to be very active like monkey. monkey की तरह एक्टिव मत रहो, ये इस डाल से उस दूसरी डाल पे, क्योंकि मंकी कुछ लेके नहीं जाता ना घर पे, हमेशा उधर ही खाया, जमा नहीं करता कुछ भी। So don't be monkey of the jungle. Okay, don't be monkey of the market. Be a crocodile. Okay, or you can be a cheetah. That's fine too. Okay, तो अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग स्टाइल होती है उनकी शिकार करने की। मंकी नहीं बनना बस, ठीक है? नहीं तो इस डाल से स्टॉक से दूसरा स्टॉक चलता रहता लोग,
हाँ, in ASTA we have been taught very nicely how to grab opportunity and be like a snapper. With those techniques, I was able to get 140% ROI in a month. Excellent, Rudra, and we are very happy for you. 140% ROI in a month, but I'm sure you must have traded in options. I'm sure, and you must have traded good. But please, please, please withdraw that profit. 140% ROI हमेशा नहीं होता है. Okay, अगर हुआ है तो बात अच्छी है, लेकिन every month don't expect that kind of return. Don't turn this profit spoil you. Okay, don't make this profit turn you into a overconfident trader. Okay, ये नहीं तो ना अंधाधुन कुछ भी करते हैं लोग और लॉस करते हैं. So please 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 withdraw this 140% जो भी तुम्हारा आया है ना, वापस विड्रॉ कर लो प्रॉफिट और उसी कैपिटल से शुरू करो और वापस स्नाइपर की तरह बैठो. अगर कोई कॉल या पुट लेना है तो आराम से माइंड योर एंट्री एंड डू इट. ओके, यप. हटा सावन की घटा. ओके, अगले कमेंट्स क्या है देखते हैं. Oops. Looking forward to become full-time career and also willing to learn with patience. However, my professional commitment does not give me enough time to trade in Indian market. Can I start forex trading as it gives me? देखो, it's not about finding time for trading, okay? It's about finding time for study and it's about finding time for developing skill. Okay, so it doesn't matter, पर 24 घंटा वैसे तो क्रिप्टो करेंसी भी चालू रहता है. इसका मतलब क्या सारे लोग क्या प्रॉफिट करते हैं. Okay, so if you don't have time out of your busy schedule for learning and for building a skill and for taking education, then don't trade. Okay, so trading is not about finding time for trading. It's not about that. It is about making market work for you. So you should find time for trading, studying, and then take positions. You can do positional trading. So why forex? Okay, and then obviously you have to find out whether it is legally possible for you to do cross currency trades. A lot of people do it. I don't know. I don't do it. Okay, I don't do cross currency trades, and just because there are 24 hours available. Okay, but what you can do if you are working, you can do silver micro and all, which can be in the evening. अगर तुमको day trading ही करना है तो, but otherwise, I would strongly recommend if you are busy, you get into positional trading and learn options. Okay, so जैसे मैं बताता हूँ मैंने US डॉलर के ट्रेड्स मैंने क्या किए. आज मैंने थोड़े से फ्यूचर्स का एग्जिट मारा. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे कवर्ड कॉल्स है करेंसी में. सो आई हैड bought at 06, I sold at 76.13. ओके, एंड मेरे ये कॉल्स भी शॉर्ट है. कॉल्स मेरे शॉर्ट है. ओके, सो 7 रुपए से ऊपर है क्या? अच्छा, सो करेंसी ट्रेड करो, पोजिशनल करो, ऑप्शंस में करो. ऑप्शंस में इफ यू डू अ प्रॉपर, इफ यू बिकम ऑप्शंस ट्रेडर स्पेशली ऑन द सेल साइड and do strategies, you don't have to watch markets every day. You can do proper study on a weekly basis, find opportunities on a weekly basis, take trades and just sit tight. For example, मैंने जो आज जो ट्रेड दिखाया है, देखो मैंने और एक ट्रेड लिया था हीरो मोटोकॉर्प का. मैंने शायद लास्ट टाइम इसका जिक्र भी किया होगा. मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने लास्ट टाइम इसका जिक्र किया था कि नहीं. हीरो मोटोकॉर्प. ओके, सो मैं इसमें बुलिश था और सब बताया था ना आपने. मैंने भी वही लिया था, आपने बोला था ना. हाँ, मैंने बोला था ना, राइट. हाँ. सो लास्ट थर्सडे को मैंने ट्रेड भी दिखाए थे मेरे, और मैंने कहा था कि इसके नीचे नहीं जाएगा, तो मैंने पुट्स बेचे थे. ओके, और आज 3-4 दिन में ये ऊपर आया है. मेरा एवरेज सेलिंग 70-80 के बीच में था और आज मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया है. ओके, सो आज कल से मैं बुक कर रहा हूँ प्रॉफिट. मेरी काफी क्वांटिटी थी उसमें. सो हीरो मोटोकॉर्प का ये जो पुट था, ये देखो ये. सो आज मैंने 22 रुपए में 9000 क्वांटिटी कवर कर ली. ओके, तो ये इसके लिए अभी मुझे क्या कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बैठना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं. ओके, एंड आई डोंट नो, आई जस्ट शो यू हीरो मोटोकॉर्प. देखो ये. सो आज भी इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही है, मार्क टू मार्केट अबाउट 52,000. बट आज ये प्राइस 22 रुपए हो चुकी है. मतलब देखो 80 रुपए से 22 रुपए, यानी 75% मूव आपने कैप्चर किया. 80 रुपीज का अगर आपका सेलिंग है, आप 20-22 रुपए में कवर कर रहे हो, 60 पॉइंट्स आप बुक कर रहे हो विद इन 3 डेज. ओके, लास्ट थर्सडे के बाद आज आप बुक कर रहे हो, यानी वीकली, एक वीक में तुमको 70-75% मूव मिला. बस हो गया. जस्ट बुक योर प्रॉफिट्स एंड सिट टाइट एंड देन लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी. व्हाट अपॉर्चुनिटी? एज आई सेड, व्हाट आई हैव डन, मैंने अभी अदानी का कॉल बेचा है.
ओके, और कल भी मैंने बेचे थे अदानी के कॉल्स। सो ये दिखा था, तो मैंने तुमको जस्ट चार्ट दिखाया था ना अदानी। मैं एचडीएफसी बैंक के भी बेचना चाहता था अदानी, इसलिए 2200 के कॉल्स बेचे। आज 2200 जाके वापस नीचे आया है स्टॉक। सो आई रियली डाउट वेदर इट विल क्रॉस दिस हर्डल अगेन। It's been going up quite some time and it is like a fifth wave. Okay, so it may go sideways, but even if it goes sideways, I'll be better off because मैंने calls बेचे हुए हैं। ठीक है सर, एक बात, आपने अपने टाइम में किसके पास सीखा था जिससे हमारे को आपके जैसे सर मिला? आपको कोई ऐसा सर मिला था क्या? कोई नहीं। आई वॉज नॉट दैट लकी, मुझे कोई नहीं मिला, मुझे सिर्फ मार्केट मिला और बहुत सारे बुक्स मिले जो मैं पढ़ता था, लेकिन बुक्स पढ़ के ना कुछ होता नहीं, ये मैंने समझ लिया। बहुत सारी किताबें पढ़ी मैं व्हेन आई वाज इन द यूएस। शिकागो में, शिकागो एरिया में मैं रहता था, नेपरविल में, एंड देयर वाज अ एब्सोल्युटली वंडरफुल लाइब्रेरी। नेपरविल की लाइब्रेरी इज वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज इन द यूएस। So sometimes I used to bring those books and sometimes weekends I used to go there with my son. मैं, मेरा बेटा कुछ पढ़ता था, मैं भी पढ़ता था, मैं टीए के बुक्स पढ़ता था, वो सुनता पढ़ता था, and then I used to try and experiment with those, with and then I used to post a lot during those days also. मैसेज ग्रुप्स में वगैरह में पोस्ट करता था मेरा स्टडी एंड ऑल, उससे सीखा हूँ। प्रॉफिट होते थे, लॉसेस होते थे, प्रॉफिट होते थे, लॉसेस होते थे, और धीरे धीरे मार्केट ने सिखाया। फिर धीरे धीरे एलियट समझ में आया था, एलियट की मैंने पढ़ाई की थी तो वो भी अप्लाई करके देखा, लेकिन एलियट में भी मार खाए थे। 2008 का बॉटम मैंने अच्छी तरह से पकड़ा था, लेकिन 2011-12 में एलियट के कंसेप्ट से भी डायरेक्ट कंसेप्ट जब अप्लाई करने गया तो नुकसान ही हुआ था मेरा। देन आई न्यू दैट एलियट कब कैसे अप्लाई करना होता है। तो मैंने जो कोर्स डेवलप किया है, इट इज नॉट अबाउट इट्स नॉट अबाउट एलियट काउंट्स। तो इट्स नॉट अबाउट काउंट्स, लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ बुक्स जस्ट फोकस ऑन काउंटिंग। दैट्स नॉट द वे टू डू इट। टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर यू हैव टू master the art of technical analysis. It's not a science. Okay, you have to master that art. And मेरे courses इसलिए लोग कहते हैं कि sir, how can you make it so simple? Why? Because it's my experience of last so many years. Okay, which is based on I've sat in front of market for hours and hours and hours to watch how markets behave. So पराई सेक्शन क्या होती है, कैसे मार्केट बिहेव करता है, न्यूज को कैसे हैंडल करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो सब मिला के हमने जो कोर्स डेवलप किया है। और तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स को कि मेरे जो 4 बुक्स है ना, जो 4 लेवल के बुक्स है, वो काफी है, तुमको बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एलियट के कितने सारे स्टूडेंट्स ने हमें यही फीडबैक दिया है कि सर आपका जो एलियट सिखाना है वो अलग ही है, आप कितने भी बुक्स पढ़ो, हमारा एक एलियट का बुक पढ़ लोगे बहुत है। ओके, और उसमें हम मैरिज भी करते हैं, शादी भी कराते हैं, ओके, एलियट की और टेक्निकल एनालिसिस की। सो दैट्स हाउ इट इज। सो मार्केट taught me, dear, I don't have any guru or teacher, no trainer, books and market only. Okay, how can you make trading as a, हाँ, एक मैंने सेमिनार जरूर अटेंड किया था जस्ट टू सी क्या ये लोग, जैसे मैं यूएस से इंडिया आया था मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, हाँ मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बाद में क्योंकि मैंने उसके बाद सेमिनार के बाद वो जो ट्रेनर थे उनसे भी मिला था और मैंने बोला था कि आप जो सिखा रहे हो ना, ये जो ब्रेकआउट कंसेप्ट और वो सब, ये थर्ड वेव के लिए ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन एवरी मार्केट। कुछ भी कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है कैसा हमेशा थोड़ी ना होता है। वो एबीसी को भी ब्रेकआउट कहते थे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट कहते थे, तो ऐसा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हमेशा नहीं होता है। सो वो मेरा थोड़ा चर्चा हुआ बाद में, लेकिन ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी, आई डिड नॉट आर्ग्यू मच, I left it, but I wanted to see how seminars are being conducted, and then just देखना था कि क्या करते हैं लोग यहाँ पे और क्या कैसे सिखाते हैं। Just one seminar I had done, not for my own learning, because I have been teaching and I have been posting and I have been showing stuff to many students. So that was the only experience. But that I knew lot of people who have studied from that trainer have learned from me, and they know what the difference is. Okay, in their turn training and our training, obviously that institute is no longer, I mean, कुछ खास सिखाते ऐसे मुझे लगता नहीं है अभी वो। Okay, and we are at a different level altogether. Okay, क्योंकि कुछ ट्रेनर्स जो है वो सिखाते हैं वो एक आधा अधूरा होता है थोड़ा सा, in certain ways in trending markets it can work, trending markets it can work मतलब क्या कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो सारे तुम्हारे ब्रेकआउट चलते हैं, वो थर्ड वेव का मार्केट होता है, और वहां पे एक्सटेंडेड थर्ड वेव है तो तुम्हारे सारे ब्रेकआउट चलेंगे। लेकिन वी आर नॉट द पीपल हु फॉलो ओनली ब्रेकआउट्स इन द ट्रेंड थियरी, वी फॉलो एवरी काइंड ऑफ मार्केट, वोलेटाइल मार्केट, चॉपी मार्केट्स, गिव मी एनी काइंड ऑफ मार्केट वी कैन डू इट। ओके, और या
सो हाउ कैन यू मेक ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन, ये एक मेरा वीडियो आया था, जरूर देखना। ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्पेशल सेशन लिया था, आई ओपनर स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशल सेशन लिया था, तो जरूर देखना। हाउ कैन यू मेक ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन, इट्स अ सीरियस प्रोफेशन, नॉट अ गैम्बलिंग। ओके, Chandrakant कहता है ग्रेट सेशन एंड लर्निंग सर, 4 days ago I attended a live session in Bangalore and one of the most boring market but one of the best live training sessions. Okay, you showed what we can do with our skill. Thank you for providing such skill. So Chandrakant is our student and also one of our AC leaders and I know what he's talking about. मैं बैंगलोर में लाइव ट्रेडिंग लिया था, मैं देखता हूँ कौन सा दिन था वो, बैंक निफ्टी चार्ट, आई थिंक it was this day, probably 31st March. No, हाँ 31st March, right? Yeah. नहीं 31st March को तो मैंने इसका mentorship का स्टूडेंट के साथ सेशन लिया था. I don't remember which one, but it was absolutely sideways market on that particular day. I think it was this day, 17 March. Yeah, it was this day. Bangalore is 16 March. Yes, 17 March, no? Yes, right. So this was the day, and this is how the market opened, and it was just sideways, very, very boring price action for traders. But I had shown them how to make money in this market. You know, we had done some trades also. So that's what Chandrakant is talking about. Okay. Thanks for clearing my doubt, sir. Raj Kodra. Today I got clarification on my one more misconception, which was money can be made, easily made. But as Mandar sir said that he has 40K profit on expiry, made me realize that we well-experienced person like Mandar sir makes 40K in a day. I cannot make more than that. I used to get astonished seeing Avadhut sir's 10-20 lakh profit on a daily basis, but Mandar sir's profit has made me grounded. Okay, guys, देखो मेरे जो profits है ना उसपे मत जाना, because my capital is also decent. And मैं कहता हूँ मेरा aim is not more than 5 to 10% a month. Okay, sometimes I do cross that. Okay, sometimes I do 5% a week also. But on an average, if I make 5 to 10%, 10%, 15% a month, I'm happy about it. So my capital is decent. So if you really look at, the way I have sold Adani calls, मैंने almost 50-60 calls बेचे, 50 lots बेचे, 60 lots बेचे. So that's how my position sizing is more. So don't go buy my profit figures. But let me tell you, same study है, same process है. And Mandar, I think Mandar is there with us. So Mandar, if you can just come and share with them, 40K profits. They are saying that सर but you can make more than Mandar, and there are absolutely वही मैं कहना चाहता हूँ कि 40K should not be a limit for someone, but 40K आता है ये भी तुमको पता होना चाहिए कि 40K भी आ सकता है, पहली बात. दूसरा है ना, आस्था में वी आर टॉट अबाउट संस्कार. वो संस्कार इंपॉर्टेंट है. मार्केट में तो बहुत पैसा है, मगर संस्कार ये है कि मैं मेरे कैपिटल के अनुसार एक्सपेक्ट करूं, ना कि मैं 2 करोड़ एक ट्रेड में एक्सपेक्ट करूं. कैसे हो सकता है? तो मेरा कैपिटल और जो मैंने ट्रेड लिया, मैंने ऑप्शंस बेचे थे, तो उसमें मैं बड़ा एक्सपेक्ट करूंगा ही नहीं. आई हैड सोल्ड ऑप्शंस, तो बड़ा क्यों एक्सपेक्ट करूं? सुदामा आता है तो उसमें बड़ा मिलता है, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज अबाउट. तो ऑप्शन बाइंग है तो बड़ा मिलता है. उसने असर ने अभी भी बताया किसी को कि 140% ROI आया है, दैट वाज ऑप्शन बाइंग. सो ही हैज डन इट दैट वे. So you have to be grounded. That's the good thing that has happened to you. Raj, TA जो भी है, grounded तो रहना ही है, undoubtedly. So good sanskar. At least we made some sanskar on you. Right. Yeah. So thanks, dear. And I think we have Tarun also, Rajesh also. If you guys can join and share your thoughts. And Rajesh is not there, I guess. Yeah. Tarun is there. Yes, Tarun. What is your view? What you are doing and any trades that you guys have done? Anything that you want to share? मैंने थोड़ा सा नेचुरल केस अभी शॉर्ट किया है और इसमें एक थोड़ा सा डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ. या थैंक यू मंदार, थैंक्स अ लॉट डियर, थैंक यू. ओके, नेचुरल गैस का मैं दिखाता हूँ. मुझे क्या लगता है मैं बताता हूँ. नेचुरल गैस हैज बीन मूविंग अप relentlessly, recently, but abhi ek monthly mein there is a huge hurdle. Okay, and unless there is a genuine breakout above this, but these are commodities and thoda dekhna padega whether it really takes out this hurdle. And hence daily mein agar hum dekhe, so daily or hourly तो कल एक गिरावट आई थी, यहीं पर मैंने शॉर्ट करके यहाँ पर कवर किया था कल रात को. हमारा जब सेशन चल रहा था तो इसी कैंडल में मेरी बाय भी हिट हुए थे.
अब उसी इसी को मैंने आज बेचा भी है, ओके, अभी जस्ट बेचा है, एंड मैं चाहता हूँ कि थोड़े प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लूँ, यू नो, सो तो देखो ये प्रॉफिट बुकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी 1.8 लाख आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ चलो एक बार 60 लॉट्स मेरे पीछे हुए हैं, सो आई वांट टू बुक इट। 6650 में अभी बाय ऑर्डर रखा है, सो यू नो डू स्विंग ट्रेड्स, यू नो, दिस इज व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। इट हैज डन अ हायर हाई, सो आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ वेट फॉर दिस ट्रेंड लाइन टू ब्रेक। सो ये देखो, ये एक मेजर सपोर्ट है ना, सो आई वांट टू बुक ऑन दिस सपोर्ट। सो यू कैन डू some quick trades in as you see price action, okay, all right। अब वापस हम जाते हैं। सर सेशन वाज अमेजिंग, आई वुड लाइक टू, ये कौन सा एपिसोड है? I was like as one question, I'm having a lot of debt and lost so much money in stock market, can I start from scratch again? Total debt is 13 lakhs and card outstanding is 4 lakhs. Oh dear. So your total liabilities of 17 lakhs. Sir, is it possible to clear all the debts by learning ASTA course? And what is the ideal capital to become professional trader? What is the ideal capital for to become a professional trader? देखो, money does not make a trader. Okay? So पहली बात, क्या मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बनूंगा? क्या मेरे पास 10 लाख रुपए है तो क्या मेरे पास 1 करोड़ है तो मैं क्या प्रोफेशनल ट्रेडर बनूंगा? या 10 करोड़ है तो क्या प्रोफेशनल ट्रेडर बनूंगा? ऐसे नहीं है। मनी डज नॉट मेक अ प्रोफेशनल ट्रेडर, अ प्रोफेशनल ट्रेडर मेक्स मनी। ओके, पैसा तुमको ट्रेडर नहीं बनाएगा, ट्रेडर एक प्रोफेशनल है जो पैसा बनाता है, इस बात को समझो। ओके, सो इफ यू हैव कैपिटल, इवन इफ यू हैव 10,000 50,000 कैपिटल, ओके, और 1 लाख कैपिटल, ओके, तो पहली बात तुमको ना एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहूंगा। नाम क्या है भैया हमारा? नाम है, ओ नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार। ओके, आई डोंट नो, सो ये क्या नाम है? Sorry, I think anybody guys can understand this. Sir, it's in South Indian language. अभी राजेश नहीं है यहाँ पे, तो नहीं बता। तो ठीक है, अगर सुरजीत होता तो शायद बता पाएगा, बट एनीवेज डियर, तो मुझे क्या कहना है, तुम्हारे जो 17 लाख का जो पैसा है उसको रिकवर करने के लिए तुम मार्केट में नहीं आना। ओके, तुम आओ एक स्किल डेवलप करने के लिए। जो 17 लाख क्यों, तुम 17 करोड़ कमाओ यार मार्केट से। Why just be in the market to recover that, clear the debt? और एक बार प्रोफेशनल बन जाओगे तो धीरे 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 आने वाले समय में 1 करोड़ भी क्रॉस करोगे। 2031 का हमारा एक मिशन है कि every student that joins with us becomes a professional trader and crosses at least 1 CR milestone. But that journey can start from small. Okay, it can start from maybe 1 or 2 lakh capital, and initially you have to do only focus on 5 to 10% ROI. Okay, even with that you can cross 1 CR milestone, let me tell you that. Okay, so once you become a professional, then you can slowly and gradually increase your capital. लेकिन अगर इस पैसा डेट को क्लियर करने के चक्कर में अगर तुम ट्रेडिंग करोगे तो बहुत सारी गलतियां करोगे। ओके, और अगर लोन लेके ट्रेडिंग करोगे तो और गलतियां करोगे। सो देखो, तुम्हारा ना फोकस अलग होना चाहिए। फोकस मस्ट नॉट बी मनी। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी टेल आवर स्टूडेंट्स। यू डोंट कम इन द मार्केट विद द फोकस ऑफ मेकिंग मनी। So with the focus of clearing your debt, if you come in the market, you are likely to make a lot of mistakes और वाट लग जाएगी, ठीक है? So don't do that. But skill डेवलप करने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। ओके, तो तुम पहले ही देखो, ऐसा नहीं है ना कि बारिश होने के बाद में छत बांधूंगा, ऐसा नहीं होता। तुम पहले से छत बांध लो, बाद में बारिश आए कुछ भी हो, सो यू बी प्रिपेयर्ड टुडे। डोंट नॉट जस्ट, अगर तुम्हारा डेट नहीं होता तो क्या सीखोगे नहीं? ओके, हाँ मुझे डेट नहीं है तो मुझे क्यों सीखना है, ऐसा थोड़ी होता है। सो मेरे पास डेट नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे किसी को पैसा नहीं देना, तो व्हाई शुड आई लर्न, ऐसा होता है क्या? यू शुड लर्न नो मैटर व्हाट, एंड यू शुड डेवलप एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, नॉट टू मेक ओनली 5-10 lakhs or 17 lakhs. Initially maybe only 5,000 rupees, initially only 1,000 rupee profit on a capital of maybe 10,000 rupees, okay, or 20,000 rupee capital. You make only 1,000 rupee. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स नॉट अबाउट अरे मैंने बस 1,000 ही बनाया, उसमें क्या किया मैंने, ऐसा नहीं फोकस होना चाहिए। तुमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज टर्म्स में देखना है। तो अगर तुम 10,000 पे 1,000 कर रहे हो, इसका मतलब 10% कर रहे हो। कौन सा बैंक तुमको 10% देता है एक साल में? कोई भी नहीं देता। तुम अगर एक महीने में 10,000 पे 1,000 कमा सकते हो,
जो तुम डॉलर ट्रेड करके कर सकते हो, सिल्वर करके कर सकते हो, या इक्विटी में भी कर सकते हो, तो तुम जरूर देखो. तो दैट इज हाउ यू शुड स्टार्ट योर जर्नी. ओके, एंड डोंट लीव जॉब. Okay, to become a full-time trader, don't leave job. You can continue to do your job and repay this debt. ये क्रेडिट कार्ड का, पहले मैं बोलता हूँ तुमको, ये जो क्रेडिट कार्ड का तुमने लोन लिया है ना, वो पहला चुकता करो. ओके, ये 4 lakhs क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, बिकॉज आई थिंक यू मस्ट बी पेइंग 26-29% interest on this. So this is a very bad loan. So first you clear this and then you can clear the other bank debts. Okay. All right. Sir, I'm not able to understand this call and put long and short terms which you while speaking. Okay. You can't understand. Okay. No problem. This concept seems very difficult as I was student of arts. देखो आर्ट्स छोड़ो यार, हमारे पास ना स्कूल के स्टूडेंट भी सीखते हैं और उनको भी एक टर्मिनोलॉजी मालूम हो जाती है. जैसे अश्मित का वीडियो तुमने देखा होगा, जिसने पंजाब नेशनल बैंक में पूछ लिए थे और वो ऑप्शन ट्रेडर है. संघर्ष इज ऑप्शन ट्रेडर. एंड अभी भी हमारे इस बैच में कल ही मेरी बात हुई. ओके. और मैं कुछ दिखाना चाहूंगा. कल मेरी बात हुई हमारी कल जो हमारे सेशंस हुए, कल के सेशंस के, तो उसके मैं तुमको ये दिखाता हूँ, पिक्चर्स दिखाता हूँ. लेट मी शो सम पिक्चर्स. ओके. एंड ये देखो, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं. दे वर एंजॉयिंग दिस होल सेशन सो मच. ओके. एंड 817 लोग थे एक ही फनल में. So you see the number here, but people enjoyed thoroughly. Okay, and some of you guys can see this. And these are our SMM students. 3G09 बैच हमारा अभी शुरू हुआ है. ओके. और ये जो है ना भरत पटेल, इसकी पूरी फैमिली, तीनों ने अलग से एडमिशन लेके बैठे थे. देखो ये, his wife, his son who had just appeared for 10th exam and now free, and he himself. Okay. They were all doing the seminar, sitting in different rooms, और the entire family was it. And ये उनका मॉनिटर है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्वराज जोशी, और उसने भी कल very proudly mentioned. And then I asked Tarun also to join because he's also a chartered accountant, ex-chartered accountant. Both of them have left their jobs. So Swaraj Joshi was mentioning that उसके ग्रुप में he is a monitor. ये हमारा मॉनिटर है और इसका मॉनिटर है. ये जो SJ करके है ना, ये SJ ऋषभ पटेल, तो ये उसका अलग मॉनिटर है, इसका मॉनिटर कोई अलग है, BR. सो ये SJ जो है स्वराज जोशी, उसके बैच में, उसके ग्रुप में 2 से 3 स्कूल के स्टूडेंट्स है, 7th और 8th स्टैंडर्ड के. तो वो कह रहा था, स्वराज कह रहा था, सर मेरे ग्रुप में 2-3 बच्चे हैं जो 7th और 8th स्टैंडर्ड के हैं. ओके. तो तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कोई भी हो, देखो कोई भी चीज नहीं होती है तो तुमको पता नहीं होगा. ओके. लेकिन तुम अगर सीख लोगे तो ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, तुमको पता चल जाएगा. सो यू डू वन थिंग, you attend one of our eye openers. Okay. So ये eye openers जो होते हैं हमारे, ये अटेंड कर लो. ये देखो हमारा आई ओपनर है. आई ओपनर अटेंड करो. यहाँ पे हम कोई बड़ा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं देने वाले तुमको. हमारे आस्था के कोर्स के बारे में भी सिखाएंगे, लेकिन हाउ टू चूज गुड स्टॉक्स, हाउ टू चूज विनिंग स्टॉक्स वगैरह हम सिखाने वाले हैं. और मेरा मराठी में आई ओपनर आने का. ओके. मराठी में आई ओपनर है 10 तारीख को, इस आने वाले संडे को, इतवार को. ओके. और उसके बाद 17 तारीख को हमारे ट्रेनर्स के आई ओपनर्स है, 17 तारीख को. ओके. साउथ इंडिया में इंग्लिश में और बाद में हिंदी में. तो जरूर अटेंड करना. एंड इसके बारे में मैं बताऊंगा. और सो you don't have to worry whether you are a student of ASTA. Just join ASTA and you'll know all these terminologies. And just terminologies मालूम होने से कुछ नहीं होता dear. You should develop the skill to actually execute in the markets. I have seen many YouTubers. इधर राजा फोन किया ना. They are using 3 to 6 screens for trading. Is it necessary? No, I don't know. I don't know about others. I use only one screen. मेरा laptop. I like to keep it very simple. Okay, and I believe in positional trades. So हाँ, एक सिंगल लैपटॉप करके मैं स्क्रीन कभी-कभी विंडो स्विच करता हूँ देखने के लिए चार्ट्स. जैसे मैंने ये देखा, मेरे नेचुरल गैस का चार्ट देखा, हो गया. So I don't know whether to become a professional trader you have to have a kind of professional setup. No, professional setup will not make you a professional trader. But having said this, if your study requires you to watch multiple screens at same time instead of switching screens and all, and if you're a very, very active trader, then maybe yes, you can. But
मैं यूज नहीं करता, मैं सिर्फ एक सिंगल स्क्रीन लैपटॉप यूज करता हूँ, और मेरे सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लाइव ट्रेडिंग करते हुए देखा है। मैं एक लैपटॉप यूज करता हूँ, जब बड़े बड़े हॉल्स में मैंने सेशंस लिया है, मैं लैपटॉप यूज करता हूँ, स्क्रीन भी दिखाता हूँ लोगों को जब ट्रेड करता हूँ। ओके, सो अगर एक 4-4 5-5 स्क्रीन कहाँ से लेके आऊंगा, उधर भी दिखाना है तो लाइव मार्केट। ओके, सो आई डोंट यूज मल्टीपल स्क्रीन। ऑलराइट, सो एज आई सेड 10th अप्रैल को मराठी में है, ये मराठी में है, सो डोंट एनरोल अनलेस यू नो मराठी। तुमको अगर मराठी आती है, तुम्हाला मराठी येत असेल तरच तुम्ही हा आय ओपनर अटेंड करा. माझ्या स्टुडंट्सना सगळ्यांना मी सांगतो, प्लीज तुमच्या सगळ्या नातेवाईकांना सगळ्यांना सांगा, त्यांना जर मराठी येत असेल, मराठी समजत असेल, तर जरूर अटेंड करायला सांगा. मला खूप मजा येते मराठीमध्ये आय ओपनर घ्यायला. आय एन्जॉय, कारण मी स्वतः एक मराठी मीडियमचाच मुलगा आहे. ओके, सो आई एम फ्रॉम मराठी वर्नॅक्युलर मीडियम, मराठी मीडियम. सो मराठी में सीखा हूँ 10वीं तक. ओके, सो मराठी में आय ओपनर लेने में मजा आएगा. And obviously understand why markets rise or fall, recognize winning and losing stocks, root cause of failures, benefiting from falling markets and things like that. So we are going to give you a roadmap, and we will also tell you about the ASTA. Then next, obviously I'm going to have next episode on 14th of April. Okay, so that's it. I think today's session I enjoyed a lot. Again, if there are some questions in the chat box, guys, there is something in the chat box, please post in the chat box. I'll definitely try to address them. And coming back to my view and coming back to this. Okay, 3 eye openers है, and then you can go and watch आस्था के reviews. आप देख सकते हो, Facebook के reviews, Google के reviews. Our students really appreciate us. And अगर किसी को compare करना है तो there is no comparison. For ASTA and for our students, we are the best. Okay, and yes, we are the best. The kind of support system you get in ASTA, nowhere you'll find. Okay, why? Because we can do it. We have that team. तो अगर जैसे आपने इस फोटो में देखा, और मैं और एक तुमको पीपीटी दिखाना चाहूंगा, जो अभी रिसेंटली हमारे जो सेशंस हुए थे, just to check what kind of things we have done. And yes, quickly if you can just show you. Yeah, so बहुत सारा धमाल किया हमने, just भारत भ्रमण में. This was Ahmedabad, this is Pune, this is Mumbai live market session. Okay, Kolkata, Delhi, Bangalore, and Bhubaneswar. So we have really connected with all our students recently, and it was fun, lot of fun. So मेरा एक मानना है, कलेक्टिव डेस्टिनी में मैं बिलीव करता हूँ. हम सब साथ में मिलके जब एक मिशन के लिए काम करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है. Even sky is not going to be the limit. So thank you, students. Thanks for all the nice comments. And even if you don't like this session, you can dislike it. If you like it, just click on the like button right now. Click on the like button right now and subscribe to the channel if you have not already done so. Okay. If you want to know my view on the markets, I believe Nifty has hit the ceiling, and then it's going to kind of correct a bit. अब वापस एक थोड़ा ऊपर आएगा, लोअर हाई करेगा, तो जो सीलिंग है वो तोड़ना मुश्किल रहेगा निफ्टी के लिए. So as I said last time also, मैंने बताया था कि मुझे नहीं लगता कि नया हाई इमीडिएटली आएगा मार्केट में. So my view on the market, natural gas, look at that, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया तो मेरा, and this is what it is, मेरे पूरे कवर हो गए देखो. And I have booked 4.5 lakh profit right now in this. Okay, ये देखो मेरे ट्रेड्स. So मुझे बताओ, इसके लिए कोई डबल स्क्रीन की जरूरत है? मैंने शॉर्ट किया था, ऑलराइट, 69, 68 में, और 64 और 61 में मैंने कवर कर लिया, कि मैंने कवर ऑर्डर्स डाल के रखे थे, एंड आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड. ओके, 4.5 लाख का प्रॉफिट आ गया. ऑलराइट, सो मैं अभी क्या करूंगा, मैं और 30 क्वांटिटी 64 और में बेचने को रख देता हूँ. अगर गया तो ठीक है. वाई? बिकॉज आई नो द लेवल्स. आई एम अ लेवल्स ट्रेडर. ओके, सो मैं लेवल्स पे जाता हूँ. बट नाउ मोस्ट लाइकली इफ दिस ऑल्सो गोज, देन नेचुरल गैस में हैव अ बिग फॉल. ओके, इफ दिस ट्रेंड लाइन गोज. सो लेट्स सी. हमेशा कुछ ना कुछ यूट्यूब लाइव में लाइव ट्रेड्स भी हो जाते हैं हमारे. मैंने अभी आप सामने आपको दिखाया कि मेरी शॉर्ट पोजीशन है, मैं कवर कर रहा हूँ, और मेरी और एक पोजीशन जो नीचे में थी 61 के उधर, वो भी कवर हो गई. सो माय 60 लॉट्स हैव बीन कवर्ड, एंड 4 ब्रिक्स यूनिवर्सिटी के बने. 4 क्या, 4 से भी थोड़े ज्यादा. सो देखो वापस बाउंस आ गया. ऑलराइट,
So 60 to 85 का 68.95 and 60 to 85. So how many points have garnered? 6 points मिले हैं. 6 points is decent move that I've captured. Okay, to make this 4.5 bricks. All right. So this is how God market blesses you always. And ये सारा, you know, I believe, you know, this mission, ये मिशन कामयाब हो, ये श्री की इच्छा है, you know, यूनिवर्स की इच्छा है. तो जुड़ जाओ आस्था के साथ, आई ओपनर अटेंड करो एंड ट्राई टू जॉइन दिस फैमिली फॉर एवर. ओके, सो थैंक यू सो मच. जैसे मैंने कहा कि निफ्टी मुझे लगता है कि साइडवेज रहेगा एंड वो रेजिस्टेंस ब्रेक करना मुश्किल रहेगा. अदानी पैक मुझे लगता है टॉप हो रहा है अभी, और आईटी पैक भी टॉप हो चुका है थोड़ा सा, अभी शॉर्ट टर्म टॉप है. इन्फोसिस सेम स्टोरी. सो एक्सिस बैंक इज राइट एट द हर्डल. आई एम नॉट बुलिश, extremely bullish on the market. I expect market to correct from here. So it may go either down or sideways, but I'm not extremely bullish. And yes, can I be wrong? Yes, I can be wrong. All right. So thank you so much for joining. I enjoyed it. And if you enjoyed, please click on the like button and subscribe to the channel if you have not subscribed again already. Thank you so much. Bye, everybody. God bless you. Thank you. Bye. Guys, by the way, मेरी सेल ऑर्डर भी गई. ये देखो, वापस 30, 6480. ओके, 6480 में 1820. मतलब अभी गई है, 1 मिनट भी नहीं हुआ. पर क्या हुआ? म्यूजिक चालू. अच्छा, म्यूजिक. या सो जो मैंने 6480 में सेल ऑर्डर रखा था वो भी चला गया. तो क्या हुआ? 6120 में बाय हुआ, 6480 में सेल हुआ. ऑलराइट. सो अब वापस बाय रखता हूँ 30 लॉट्स के लिए. 60 to 10, 6180. सो 3 पॉइंट्स भी मिलते हैं तो भी ठीक है, हुआ तो ठीक है. वाई? बिकॉज यू नो, ये देखो, ये बाउंस जो आया था ना, ये बाउंस, अभी इस बाउंस में वापस सेल हुआ है. क्या? तो ये लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है. सीधा टूटा था, अभी थोड़ा सा बाउंस आया है इसको रिटेस्ट करने. उस लेवल के हिसाब से मैंने सेल रखा था, वो चला गया. ओके, अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं जरूर लूंगा. ओके, बाय.